Namaste, a very happy new year to all of you. Now, from today onwards, I am starting my reading. So, this will be your reading from zodiac wise from 1st January to 15th January. Okay, so I'll start with Aries and then I'll go to Pisces. Okay, Aries to Pisces. Aries. So, let me see what's coming up for Aries in career. Okay, career, and then I'll see their relationships. Okay, Aries, career wise. And Aries love life and their relationships in general. Okay, Aries, see, career में I can see that you are researching onto something, maybe कि आपको कोई opportunity मिले, and opportunities के cards आपके career में भी हैं, and it's also in your relationships or love life also. Okay, so it means कि see, opportunities 2025 begins with opportunities for Aries. Okay, great start for 2025, isn't it? What kind of research are you doing in your career? Let me see. What is that? Actually, Aries, there are high chances कि you want to fresh start something in your career. हो सकता है कि आपके हाथ में भी opportunities हो and you are researching on it, like वो better है नहीं है, maybe you will be connecting to astrologers or anything of such kind. Okay, and when it comes to your relationships, I'm seeing some incoming messages, very important messages. What is that? Let me see. Messages. What message is that? See, there are chances that हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा है स्पेसिफिक जिससे या तो आपकी बन नहीं रही हो काफ़ी टाइम से, हो सकता है थोड़ी सी अनबन हो, तो उनके तरफ से कुछ मैसेज आ सकता है. इट कैन बी अ मैसेज ऑफ रिकन्सिलिएशन. रिकन्सिलिएशन हमेशा लव लाइफ में नहीं होता है ना. इट कैन बी इन एनी रिलेशनशिप. इट कैन बी योर सिबलिंग, इट कैन बी योर फ्रेंड, somebody who is very close to you. And ये this is the starting of 2025. हो सकता है कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप्स को मेंड अप करना चाहते हैं वो आपको न्यू ईयर विश करने के लिए कनेक्ट करने की कोशिश करें, keeping it an excuse to connect to you. Are you getting Aries? Okay, overall it's great start for Aries. And let me see any other message that the universe is having. And this is my favorite Lenormand. Okay, so let me see any additional messages if we have for Aries 1st January to 15th January. Okay, again I'm seeing some similar kind of message, Aries, for you. See, this is a message for friendship. और कोई आपकी तरफ बढ़ सकता है, होल्डिंग अ रोज. देयर इज़ अ लेडी होल्डिंग रोज इन हर हैंड. उसका मतलब ये होता है कि देयर इज समबडी हु कैन अप्रोच यू टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विथ यू, और इट कैन बी समथिंग न्यू ऑल्सो. शांति बनाए रखने के रिलेशनशिप में, क्योंकि दोनों ही जगह एक ही चीज़ आ रही है, तो इट्स वेरी प्रोमिनेंट इन योर रीडिंग. ओके, एंड नाउ all the best, Aries, and I'll come to Taurus now. Taurus, how will be the career of Taurus 1st January to 15th of January? Taurus, career wise, great. This is one of my favorite cards. And relationship wise, Taurus, see, career wise, so it's great because I'm seeing that there can be a mentor. हो सकता है कोई आपको mentor करे आपके career aspect को लेकर. हो सकता है आपको कोई गुरु मिल जाए.
एंड करियर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता टॉरस कि इट्स ओनली फॉर दोज हु आर वर्किंग, नहीं, it's for all those who are seeking to have a great career in their life. ठीक है, जो लोग ढूंढ रहे हैं, those who are not working and they're looking for something, तो overall it's great. मुझे दिख रहा है कि there can be somebody who can mentor you into that. ठीक है, और relationship wise Taurus, I'm seeing that although sorry to say but I'm not seeing you very happy and satisfied, as if you're missing somebody, और किसी पास्ट इवेंट को लेकर कोई रिग्रेट हो सकता है आपको इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1st January to 15th January. लेट मी सी व्हाट इज दैट. लेकिन फिर भी इट्स ओके, यू नो वाई? बिकॉज आई एम सीइंग दैट इफ़ यू फील लाइक समबडी हैज़ बिट्रेड यू इन द पास्ट, वो एक रेजोल्यूशन हो सकता है ये 2025 का, टू कट ऑफ पीपल हु आर नॉट वेरी ट्रू टू you, who are not very honest towards you. ठीक है Taurus, तो I'm seeing you taking another leap of faith towards another relationship. और हो सकता है एक अच्छी बात मैं ये देख रही हूँ कि अगर ऐसा है भी आपकी लाइफ में ना कि you are feeling betrayed by somebody, ऐसा होता ना कि अभी 2024 में मैंने जो झेल लिया, अब आगे नहीं झेलना मुझे. ओके, दिस इज डन, ओवर. अब आगे I want to fresh start something in the relationship. That's great. इट्स गुड, है ना? किसी एक इंसान के लाइफ से चले जाने से, या फिर किसी एक इंसान ने अगर आपको चीट किया एंड इफ़ द रिलेशनशिप वॉज नॉट, इट डिडंट गो द वे यू एक्चुअली वांटेड इट टू गो, इसका मतलब ये नहीं सारी दुनिया ऐसी ही है ना? Taurus, all the very best, and don't worry, this is just for 1st to 15th of January. I'll come up with another reading from 15th to 30th, for 15th to 30th. Okay, chalo. Taurus, I just wanted to see your additional messages also. Let me see. Taurus, message and communication. You can have some kind of message or communication from somebody from distant. See, beginning of the year में I'm seeing for Aries also I saw something similar messages. Maybe अभी तो वो time है ना कि when people will, somebody who's very far away from you, जिससे आपने disconnect कर लिया था, maybe just because it's New Year, तो वो आपको New Year के it's wish करने के लिए आपको connect कर रहे हैं ना. And I'm seeing a very good bond with the person this year. Okay, and there are chances कि this person may help you. अगर, और सी देयर कैन बी 2 circumstances. हो सकता है कि ये इंसान इज़ very famous or good at social media, is doing great on social media, can be any of your friends also, and I'm seeing something great, okay, with this person. Good bond, you're having something very great in the sense अच्छी friendship हो सकती है ना? It may turn into something else, male female, female male, I don't know. Okay, chalo. Now coming to Gemini. Gemini's career wise, how will be the career of Gemini in the year 2025 from 1st to 15th of January. This reading is for 1st to 15th of January. Gemini's career wise, you're willing to complete a cycle in your career. What kind of cycle is that? Okay, Geminis, you want to come out of some stagnancy. हो सकता है कुछ चीज़ें स्टक हो आपके करियर में, तो उस चीज़ से बाहर निकल के लुकिंग फॉर समथिंग बेटर. एंड ये बस प्लानिंग फेज है फ्रॉम 1st to 15th of January. ये प्लानिंग फेज है. आई एम नॉट सीइंग यू टेकिंग मच एक्शंस, बस planning and planning in the right direction. Good. Gemini's relationship wise, how will be your relationships in general from 1st to 15th of January? Gemini's. Geminis, I'm seeing you enjoying your singlehood, and see,
द कार्ड्स दैट फ्लिप, ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं. दिस वॉज द कार्ड दैट फ्लिप्ड इन द बिगनिंग. ओके Geminis, okay, I'm seeing you enjoying your singlehood, and I'm seeing people keeping an eye on you. They want to be with you, but I'm not seeing you into that mode to explore much at the beginning of year. हो सकता है जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, nothing new, you just want to go with the flow वाले scene में. And those who are not having any partners, I'm not seeing them exploring anything 1st to 15th of January. ठीक है? That's great, Geminis. Let me see any additional messages if I have for you, Geminis. Okay, the same message I got for Taurus also. See, again, Gemini, I said you're single, you're enjoying your singlehood. हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आपको अप्रोच करे फॉर सम मैसेज कम्युनिकेशन, एंड क्योंकि यू आर ग्लोइंग जेमिनाइज, यू आर ग्लोइंग. ओके, हो सकता है कोई है समबडी स्पेसिफिक जो आपको अप्रोच करने की कोशिश करे. सी, दिस इज़ अ न्यू ईयर टाइम. हो सकता है विश करने के लिए एंड देन वांट्स टू क्रिएट अ बॉन्ड विथ यू, एंड आई एम सीइंग यू बीइंग इनटू योर ओन जोन, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए. एवरीथिंग इज ओके. Great start, Geminis. Okay, let me see now Cancers. And see, I'm going numerology wise. Okay, series mein. Now Cancerians, let me see. Cancerians, how will be the career of Cancers from 1st to 15th of January, career wise, Cancers. Ending and a new beginning. I'm seeing you ending something, or you are planning to end something, Cancerians, and you are enjoying it. मे बी बहुत ही टर्बुलेंट फेज कुछ रहा हो, या फिर आपके कुछ प्लानिंग है जो सक्सेसफुल हो गई हो. आई एम सीइंग यू हैविंग गेट टुगेदर आफ्टर एंडिंग समथिंग और स्टार्टिंग समथिंग. ऐसे 360 डिग्री टर्न देख रही हूँ मैं करियर में आपके. सी, इट कैन बी द सिचुएशन वेयर हो सकता है कि आपके प्रमोशन एंड अप्रेजल वाला टाइम तो ये होता नहीं जनवरी. इट कैन बी समथिंग, सम अप्रिशिएशन ऑफ सच काइंड, जो आप कहीं काम कर रहे हो वहाँ पे अप्रिशिएशन हो. अदरवाइज इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू ऑलरेडी गॉट सेलेक्टेड समवेयर एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल. व्हाट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज दैट? आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, प्लीज वेट. After a great period of stagnancy, I'm seeing great changes. कुछ चीज़ें, there was something which was weighing you down, so I'm seeing you releasing it, okay? And you are absolutely into the mood of starting something fresh. Serious, okay? Great. Now, let me see, relationship-wise, how will be your situation relationship-wise? Cancerians, I'm seeing you. I'm seeing you maintaining distance from so many people. You're being very picky and very choosy towards what kind of people you want to be with. And मैं बिल्कुल भी indulge होते हुए आपको नहीं देख रही हूँ हर किसी से. Okay, and you are giving your time to and in fact you are giving time to your family members more than your friends or colleagues, something like that. Relationship wise it's good. थोड़ा सा it's all about your mindset, and ये चीज़ है ना, it's coming as a common theme for most of the zodiacs, क्योंकि जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना, then वो होती है हमारे दिमाग में ये चीज़ें कि okay, whatever we faced last year, वो चीज़ें हमें अब फेस नहीं करना, या फिर आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, है ना. दैट्स गुड. लेट मी सी इफ एनीथिंग एडिशनल आई हैव फॉर यू, कैंसेरियंस. माय गुडनेस.
मतलब there is somebody, you know, there is a very common message for three zodiacs. I'm getting similar messages. Somebody approaching, somebody trying to connect to you, and this person wants to keep a hold on to you. मतलब मैंने बोला ना, in relationship I saw that you are trying to detach from so many people this year, 2025 beginning से ही कैंसेरियंस, बट आई एम सीइंग देयर इज समबडी इन पर्टिकुलर जो छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती आपको, होल्डिंग यू वेरी टाइटली, नहीं जाने नहीं दूंगा, समथिंग लाइक दैट, डिस्कनेक्ट नहीं करने देना है. ओके, मे बी दिस पर्सन इज हैविंग वाइब्स दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट. दिस वॉज एडिशनल मैसेज फॉर यू कैंसेरियन. ओके, now I'll come to Leos. Leo. Leos, how will be your career 1st to 15th of January? Leos, 1st to 15th of January. Career wise, करियर वाइज लियो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यू आर यू मे बी इनटू सम ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग हो, बिकॉज आई एम सीइंग करियर एनहांसमेंट्स. मे बी कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो आपको सीखना हो सकता है, ज़रूरी है फॉर गेटिंग प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट. It's a great start for 2025. Okay, and let me see, the message is very clear, I don't even need to clarify. Okay, and let me see Leos. Leo, let me see how will be your relationship in general. Leos, wait. Leos, I'm seeing some passionate start of something, but there can be a possibility that you're so much indulged into your career कि मुझे लग नहीं रहा कि you would be so much interested in accepting something new or new relationships or anything of such kind. Although it is there, background में वो चीज़ें हैं, but मुझे नहीं लगता कि आप you will be interested to pursue it at the beginning. See, this is the reading for 1st to 15th of January only. Maybe afterwards, ठीक है? चलो, ठीक है. Now, let me see if any additional messages I have for Leos. Okay, Leos, any additional messages for Leo? Leos, if जिन लोगों के पास भी pet animals हैं, I'm seeing you spending a lot of time with it at the beginning of the year, and those who are not having any pet, you may would like to keep a pet for you, and it can either be any pet for you, or it can be like pet में भी it can be जैसे होता है ना वो aquariums and all आप रखना चाहें घर में. अगर ये चीज़ें वो नहीं है, there are two aspects. तो you may feel, or you may feel like there is somebody who is very loyal to you. तो आप उसको, I'm seeing that you are holding on to that person very tightly, and you want to include that person into your business or your friendship or your home environment. You just want to keep that particular person with you. Okay, जैसे क्योंकि अभी तो loyal, it's very difficult to find loyal people for you, no? तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ. And at the beginning of the year, there is a possibility that you may connect to any astrologers or for some guidance, you know. It can be Astro Shivi also. Leos, okay. Now I'll come to Virgos, how will be your career from 1st to 15th of January? 1st to 15th of January, Virgos.
1st to 15th of January, Virgos. Virgos, प्लानिंग ज़्यादा हो रही है, एक्शन कम देख रही हूँ मैं. Planning, 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 planning. But you need to take actions, no? Why are you not taking any action? Oh, got it. Virgos, there can be a possibility that हो सकता है आप जहाँ कहीं पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे you are expecting some changes. चलो अगर वो changes नहीं होता है then I'll be leaving the organization. You'll be planning to leave the organization. Or if there is nothing new, there's no newness, there's no enthusiasm in the current organization ऐसा हुआ तो okay. So that's okay. There's nothing wrong with that. 1st to 15th, okay. Within that period, let me see how will be your relationships, Virgos. Your relationships overall. Just a minute. Wait. Virgos. Relationship wise, it's a super excellent. I'm seeing you in fact spending, those who are married who are spending a lot of time in with your family, and those who are unmarried, you may and eligible to get married. तो वहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ जाए, है ना. And those who are not married but having a partner, I'm seeing you having a great time with a partner. ओके, ऑल्दो बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज दिखा, स्पेशली जब मैं सिंगल्स की बात कर, सिंगल्स नो, आई मीन दोज हु आर अनमैरिड. Can be anything, don't focus on those things, okay. Start your new year with great enthusiasm, okay. Virgos, let me see if any additional messages I have for Virgos. Virgo, see, as I said, I'm seeing you spending a lot of time with your family in the beginning of the year, okay. And I'm seeing some male and female दोनों की energies हैं, motherly and fatherly figures. हो सकता है कि family में, this is other than your mother and father, okay. हो सकता है somebody may plan to visit your home, ऐसा कुछ हो सकता है, okay. Overall it's great, overall it's good, fine. Chalo, now I'll come to Libras. Let me see how will be your career 1st to 15th of January. Libras, 1st to 15th. Career wise तो I'm seeing you feeling very content from within, जो भी आपके पास है ना. And Libras, you know how to balance out things, है ना. तो I'm seeing you very happy, very content, and there can be travel involved. हो सकता है कुछ travel भी आपको करना पड़े during that period, 1st to 15th of January. It's related to your career, and the travel will be great. बहुत अच्छा होगा वो travel, है ना. Okay. Chalo, and let me see for your relationship in general, Libra, your relationships in general. Libras, see, although I'm seeing you enjoying some moments, you know, with your family, with your friends, or somebody else, hidden, there can be something hidden, Libra, okay. But try to be very careful from backstabbers, okay, क्योंकि 2 3 4 कार्ड्स हैं backstabbing के. तो it's not very major, minor है. मतलब you just need to be very careful. जो लोग pretend करते हैं कि they are very honest towards you, they are very caring and loving towards you, तो थोड़ा सा alert रहें. Don't give the key of your happiness to any XYZ's pocket. हाँ, I said, कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपके सामने pretend करते हैं कि they are very 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 loyal to you, they are well wishers to you, you know, but they are really not. But इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं दिख रही. Just keep yourself safe,
कोई भी क्रूशियल डिसीजंस लें उसमें यूज़ योर ओन ब्रेन्स, यूज़ योर ओन ब्रेन्स, दिस इज़ इट। यू नेवर नो कौन अच्छा है कौन बुरा। आई होप कि ऐसा कुछ नहीं हो आपकी लाइफ में। ओके, लेट मी सी इफ एनी एडिशनल मैसेजेस आई हैव फॉर लिब्रास। ग्रोथ, एक्सपेंशन, चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, गुड न्यूज़ है ना। एंड आई एम सीइंग किड रनिंग टूवर्ड्स यू, मे बी कि आपके खुद के बच्चे हों जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो सकता है कि आपके खुद के बच्चे हों जो दूर रहते हों वो आपके पास आना चाहें, हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट मैरिड एनी किड इन योर फैमिली कैन बी, किसी का भी बच्चा हो सकता है। ओके, एंड दिस इज़ रिगार्डिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बहुत ही अच्छा मैसेजेस है, बहुत ही अच्छा। वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इट विल डेफिनेटली फ्लरिश लाइक एनीथिंग लिब्रास। ओके, ग्रेट। स्कॉर्पियोज, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Career wise, how will be the career of Scorpio from 1st to 15th of January? Scorpio, पता नहीं why I need to shuffle too much, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ नहीं रुक रहे थे। ओके, Scorpios, those who are working in any organization और ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा है कुछ आपकी लाइफ में कि you shifted to some another organization and you are missing your previous colleagues, और कुछ ऐसा हो सकता है कि you are not very much satisfied with whatever you are having at present, and in fact you are not able to plan something new for you at the beginning of the year. Okay, but these are minor, छोटी छोटी चीज़ें हैं। this is just for 1st to 15th, उसके बाद एनर्जी चेंज हो जाएगी। Scorpios, why are you disappointed? Scorpios, again, somehow I'm seeing that your work life is getting affected because of some family issues. Okay, hopefully it will get resolved within 15 days. If so, है ना, don't worry. And let me see how will be your relationship by the beginning of the year. Relationship wise, it's great. It's great. You're very grounded. I'm seeing a lot of passion and you're getting involved with people, you're talking to people, है ना, सब कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बट अच्छा, Scorpios, if there is somebody elderly in your family, female elderly, somebody can be your mother, can be your grandmother, can be any aunt. Okay, take care of their health because मैं देख रही हूँ you are giving time but you just need to take care of the health. Okay, आप उनसे पूछते रहे if they are okay. Okay, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है but still. Scorpio, let me see, is there anything additional that I can tell you? Scorpios, Scorpio, I'm seeing Scorpios, are you feeling finding some interest in astrology or connecting with any astrologer, finding out something hidden, कुछ you want some answers, कुछ answer चाहिए आपको, and I'm seeing you connecting to any mentor जो उसी field से है, astrology. Okay, can be a possibility. This is just a side message for you. Okay, now Sagittarius. Sag, how will be the career of Sag 1st to 15th? Sag, it's good, but I'm seeing you very exhausted. क्या हो गया? Why exhausted? You want to enhance your skills. हो सकता है कि you're not able to find out any good mentor.
Sag, is there something where you feel like you're not getting justice? आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उतना जस्टिस आपको नहीं मिल रहा आपके वर्क प्लेस पे. आई कैन सी समथिंग लाइक दैट. ओके, बट नॉट टू वरी, दीज आर द एनर्जीज फॉर 1st to 15th ओनली. ये सिर्फ आपके दिमाग में है ये चीज़ें. एंड ओवरऑल इट्स ओके. मतलब मुझे कोई नया प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. इट्स जस्ट रिगार्डिंग योर माइंड सेट. दैट्स इट. Okay, let me see how will be your relationships in general, Sag. Relationships in general. Relationship wise, it's good. I'm seeing you healing your relationship with any lady figure, motherly figure. हो सकता है कि वहाँ पे कुछ हील हो रहा हो, कुछ ईगो क्लैश हो सकता है, पास्ट में रहा हो. ठीक है, जो एंड यू वर वेरी मच फीलिंग ड्रेन फ्रॉम विद इन, तो यू आर लेटिंग इट आउट. एंड चलो ठीक है, कह दिया, मन की बात कह दी और मन हल्का हो गया. तो रिलेशनशिप वाइज ओवरऑल इट्स गुड. डोंट वरी. लेट मी सी सैज इफ यू हैव एनी एडिशनल मैसेजेस. सैज, एनी एडिशनल मैसेजेस फॉर सैज? And this was the message that I received for other zodiacs also. Sag, I'm seeing you receiving a message of love, comfort. Somebody is adoring you. Will get to know that. कुछ हो सकता है ना आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं ना इस इंसान को गलत समझ रहा था, ये गलत समझ रही थी. The person really thinks दिस पर्सन इज़ रियली अ वेल विशर फॉर मी. ऐसा कुछ हो सकता है, आपको रियलाइजेशन हो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. अच्छी बात है ना सैज? ओके, चलो नाउ कैप्रिकॉन्स. कैप्रिकॉन्स, हाउ विल बी योर करियर बिटवीन 1st to 15th of January? Capricorns, career wise, you're very much satisfied because you know where to take stand for you. You're very, very, very much protecting whatever you have. Okay? You know how to take stand. हो सकता है ये recent past में आपने सीखा हो कि नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना है. You need to protect your position, your what else? Yes, मैंने बोला ना, पास्ट में कुछ हुआ होगा ऐसा कुछ. मे बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इट कैन बी सम डाउट्स. हो सकता है किसी ने आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट किया हो सकता है किसी ने आपको पॉइंट आउट किया हो. बट कैप्रिकॉन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी 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 हार्ड वर्किंग, है ना? आई नो. तो दे नो हाउ टू build up something for them if they want to. And although overall there can be, yes, and there can be one wish fulfillment from between 1st to 15th of January. It can be anything. सबके अलग अलग विशेज होंगी ना, वो फुलफिल हो सकती हैं just because you took a stand for you. ऐसा कुछ दिख रहा है. Okay, Capricorns, let me see how will be your relationships within this period in general. Relationships in general. शांति शांति शांति. कैप्रिकॉन्स को शांति चाहिए. ओके, दे आर लुकिंग फॉर पीस, पीसफुल एनवायरनमेंट. ओके, वाई सो कैप्रिकॉन, क्या हो गया? ओके, बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है. सी, रिलेशनशिप डजंट ओनली मीन योर फैमिली रिलेशनशिप, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, है ना? तो हो सकता है कैप्रिकॉन्स आपके दिमाग में हो. कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनको समझाना बड़ा मुश्किल है, वो चीज़ आपको समझ आ जाए. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम टू मेक पीपल अंडरस्टैंड समथिंग, योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल. तो जस्ट वो कहते हैं ना, सामने वाले ने बोला 2 + 2 5 होते हैं, तो यू विल से ओके यू आर राइट, हाँ ठीक है, 2 + 2 = 5. ऐसे वाले मोड में मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉन. एंड द रीज़न इज यू वांट पीस. शांति चाहिए आपको. ठीक है, चलो, लेट मी सी इफ एनी एडिशनल मैसेजेस आई हैव फॉर कैप्रिकॉन्स. एनी एडिशनल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स? किड्स,
Capricorn, are you having a pet at your home? So I'm seeing you um, spending some time with your pet. You are and your kids are very happy at the beginning of the year. हो सकता है those who are married and having kids, हो सकता है because of you they'll be very happy. Those who are not married, तो family में तो बच्चे होते हैं, there's something related to child that makes you happy and the child happy. Okay, first thing. Secondly, I'm seeing you receiving a very excellent message from far that कुछ भी हो सकता है. This is a general, this is a common, I mean, this is not specifically for a message for relationship or career. नहीं, एक side message होता है. Some message that will make you so happy. This message can also be regarding your children or something. Maybe they'll achieve something. ऐसा कुछ हो सकता है. Okay, or any children in your home environment. Okay, Capricorns. Now I'll come to Aquarius. Aquarius, let me see how will be your career from 1st to 15th of January. 1st to 15th of January, Aquarius. Aquarius, 1st to 15th of January. Career wise is super because I'm seeing that there will be somebody who will be mentoring you. There will be somebody who will guide you into that, and you'll feel very grounded. बहुत शांत देख रही हूँ मैं, and you want to enhance, you want to learn something new, and when it comes to your finances also, I'm seeing you very grounded, not overspending, something like that. It's good. 1st to 15th of January, Aquarius. And let me see how will be your relationships during that period. In general, relationships in general. Okay. Aquarius, you are running away from anything that you feel like it's nonsense or a waste of time. It can be from any situation, it can be from any family member. And those who are single, I'm seeing that you want to be single rather than being with somebody whom you do not even trust or you cannot even trust. कुछ पता ही नहीं है कि इंसान आगे चल के क्या करेगा, कैसा ही होगा. यू आर हैविंग सम ट्रस्ट इशूज ऑल्सो, एंड पास्ट में आपने थोड़ी सी एंजाइटी झेली हुई है बिकॉज ऑफ समबडी इन पर्टिकुलर. टू आई होल्डिंग ऑन वेरी टाइटली टू योर प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट. नहीं, नो मोर from this year. Okay, you're very picky, you're very choosy. ऐसा कुछ देख रही हूँ. Aquarius, let me see any additional messages if I have for you. Aquarius, any additional messages? I'm seeing a lot of people connecting to astrologers at the beginning of the year, and हाँ, दिस इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो ना. ये एडिशनल मैसेजेस में ही आ रहा है, और ये आने का मतलब है कि वेर एवर यू विल कनेक्ट ना, यू मे गेट very good guidance. You can connect anywhere. You can connect to Astro Shivi also. Okay, Aquarius, see, I'm seeing you that you want to hold on to something that you love a lot, or it can be somebody in particular, or it can be any situation, any family situation, or it can be any decision that you are about to take, and you are a little into dilemma. हो सकता है उन चीज़ों को लेकर you will be connecting to any astrologer or somebody of such kind जो आपको mentor कर सके, है ना. And good start. It's great start, Aquarius. Okay, coming to Pisces. Pisces, you waited along. Pisces, let me see how will be your career from 1st to 15th of January. Pisces. Oh, victory, success. You're balancing out everything, your home environment, your work life, everything you're trying to balance. Pisces are like that ना, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते. It doesn't mean कि other zodiacs are not like that, but comparatively Pisces are like that, है ना. You feel like now career में ना, you feel like now I'm getting justice to whatever efforts I have put in the past. I don't even need to clarify it, Pisces. It's great. Let me see how will be your relationships in general
from 1st to 15th, Pisces, relationships in general. Excellent. You know, I'm getting some similar kind of cards for your career also, relationship also. Everywhere you're getting justice, justice. You're feeling that, chalo, ऐसे ना वो जो 2025 स्टार्टिंग 2025 विथ अ बैंग, इट्स ग्रेट. मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितनी रीडिंग करी इट वाज बेस्ट फॉर पाइसेस. पाइसेस, यू आर मजिशियंस, एब्सोल्युटली मजिशियंस. यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट, क्योंकि जो लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं ना, एंड दिस इज अ कॉमन मैसेज फॉर एवरीबडी, भगवान सुनते हैं, है ना. ओके, लेट मी सी इफ एनी एडिशनल मैसेजेस इफ यू हैव पाइसेस. Any additional messages if you have, Pisces? Growth and expansion, and those who are working in the field of astrology, you'll do excellent, great. I don't have even any words to explain. So this will be a great start specifically for Pisces. बाकी zodiacs के लिए भी it's a good start. And I'm so sorry जिन लोगों के लिए negative readings आई, don't worry, that is only for 15 days energies. You can change your energies, no? I have given you some additional messages also. ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी readings negative है, but I have to tell you what I'm seeing here now. Okay, chalo, Pisces, growth and expansion is great. So thank you so much all of you. Radhe Radhe.